Hello students, good afternoon all. This is me Dr. Kalyan. Welcome you all to this session. In this session, we are going to discuss about the Odisha economy with a special reference to the Odisha Economic Survey 2020 and 21, which has been released by the government of the Odisha very recently. As you know, while writing for the main examinations under the OPSC OS examinations, we have to quote various economic parameters, various economic indicators for the state of Odisha in the paper, like general studies paper, essay papers, as well as various optional papers. So, understanding the huge demand of the examinations, we have to know about the basic economic features of the Odisha with a special reference to this year's economic survey. So, let's get started. As you know, in an economy, good economy generally, we have three different sectors. Please students, do it remember. Three important sectors. The first sector, that is the primary sector, that is the agriculture sector, forestry, fishing, animal husbandry. All these sectors, they are primarily under the primary sector of an economy, because ए प्राइमरी सेक्टर आम कौन करती आम नेचर को डायरेक्टली एक्सप्लोइट करती आम नेचर रू डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स आम पाती फॉर द लिवलीहुड पर्पस. Coming to the second pillar of the economy, that is the secondary structure. Here we have industry, electricity, chemicals, gas. All these sectors, those are coming. All these sectors, they are coming under the secondary structure of the economy. While coming to this third pillar, that is the tertiary structure, here we have service sector. Here we have roads, education, health, banking, insurance. All these things, they are coming under the tertiary sector. As we know, सब sector प्रति sector सहित very closely related. सपोज एग्रीकल्चर जहाँ प्रोडक्शन है सेटा को आम प्रोसेसिंग करने आम इंडस्ट्री को पठाती से सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी स्ट्रक्चर. जिते सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, गैस डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डेवलप है, से बहुत सारा लोक एम्प्लॉयमेंट जेनेरेशन हुए, बहुत सारा लेबर फोर्स क्रिएट हुए. से मोर नंबर लेबर फोर्स क्रिएट है से जगह बेसी काम चाहिदा रहा तो से इंडस्ट्री चारिपटे होटेल रेस्टोरेंट ऑल द सर्विस सेक्टर्स आर गेटिंग फ्लोरिश्ड. सो टर्शियरी सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द सेकेंडरी सेक्टर. एज वेल एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो सब जिनस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सब आमर बाहर दोज प्रोडक्ट्स हैज बीन एंड हैज टू बी यूटिलाइज्ड बाय द tertiary sector, that is the service sector. Suppose गोटे वेरी गुड एग्जांपल मु दूची. सपोज प्राइमरी सेक्टर आम पैडी प्रोडक्शन कले से पैडीटा को आम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जरा पठाऊँ थ्रेसिंग मिलिंग पठाऊँ. से थ्रेसिंग मिलिंग हो सारापर फाइन राइसटा जो आम मार्केटिंग को आसी कि प्रोसेस्ड फूड टाइप किसी जिन आसूसी से टाइम आम टर्शियरी स्ट्रक्चर हो गला. That's why all the sectors of an economy, they are very closely interlinked. Coming to the key highlights of the government of the Odisha's economic survey, we have to first see which department is releasing these documents. There is a department in the government of Odisha, that is the Planning and Convergence Department, which is under the Director of the Economic and Statistic government of the Odisha. So Planning and the Convergence Department, which has been releasing this document. This economic survey, it says the challenges, the opportunity and the performance of different sectors, that are called primary, secondary and tertiary sectors of the state's economy. As well as this sector says the sustainable and inclusive growth, remove regional disparities, reduce poverty and put in place an effective public service delivery mechanism and fast track infrastructure development. ए इकोनॉमिक सर्वे आमको इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, जो रीजनल डिस्पैरिटीज रोची, जो विभिन्न अंचल जो असमानता देखा विथ रेस्पेक्ट टू मेनी इंडिकेटर्स, दैट इज योर एजुकेशन, योर हेल्थ, राइट, योर बेसिक अम्यूनिटीज, यही सब जिन जो रीजनल डिस्पैरिटी रोची से द मेन एम द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी and put in place an effective service delivery.
पब्लिक सर्विस डेलीवरी केमिति डिफरेंट मेकानिजम्स थ्रू रे आमे पब्लिक को एंश्योर करि परिबा ए सब जिंस ऊपर आम इकोनॉमिक सर्वे स्ट्रेस दउची राइट सो आमर कहूँ आम देशर इकोनॉमी आमर कंट्री आमर स्टेट इकोनॉमी इट इज ग्रोइंग at 7.1% per annum. It was growing during the period 2012 to 2019 and 2021. Very cynically, due to the COVID-19 pandemic, it has been contracted by 4.9%. So our economy shows a negative trend. But as per the International Monetary Fund assessments of the world, output is expected to grow at 4.9% in 2020 and 21. So the International Monetary Fund has given us a huge relief in terms of positive aspects of the growth. Simultaneously, the Central Statistical Organizations in its advanced estimate predicts it will grow at minus 7.7% during 20 and 21. So we have just recovered from the COVID-19 pandemic. So it will take some time to recover the previous speed of the previous growth rate of the economy. So as per this also, it is a negative aspect. Coming to the per capita income, right? Per capita income means the total number of people, how much income or how much goods and services in terms of money we are generating, and it is to be divided by the whole population of the state, right? It is we are getting a number during the 2011 and 12. It was 48,499, which is released to 1,04,566 in the year 2019 and 20. So the per capita income has been increased tremendously over a period of 8 to 9 years. So it is around 11.5, so 15.6% our increase age. Today national average देखियो गले it is around 111.51%. When we are comparing our status with our neighboring state, it is far behind, or sorry, far away, or it is leading than the Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Meghalaya, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. ये सब स्टेट मन को आम स्टेट पर कैपिटा इनकम बहुत हाई रोचे, राइट. किंतु देखिया गले कंपेयर टू अदर स्टेट लाइक पंजाब या दिल्ली या साउथ इंडियन स्टेट्स तांकर कंपेयर देखिया गले हमर पर कैपिटा इनकम बहुत कम रोची. कहीं ना पर कैपिटा इनकम कंपेयर टू अदर रिच स्टेट्स कहीं ना हमर कम रहे, कहीं जगह अनुसार देखला ओडिसा वी हैव ए रिलेटिवली हायर पॉपुलेशंस. से आमर पर कैपिटा इनकम रिच स्टेट को देखला आमर बहुत कम रहे. कमिंग टू द डिफरेंट share of the different sectors of an economy to the GDP, SGDP, GSDP, gross domestic product. आपको बेसिकली मन रखा पड़ो the agriculture sector is providing 21.27%, while the industry is providing 36.26%, as well as service sector is providing 42.47% in the year 2020 and 21. Due to the COVID, please students do it remember, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the agriculture sector overall it is contracted or it is shrunken by 6.54% as per the constant price, in which crop subsectors declaration minus 4.27%, livestock experience minus 32.97% due to the frequent outbreak of the flood cyclone as well as recent outbreak of the COVID-19 pandemic. Similarly, the industry sector also given a negative contract of 8.83%. Similarly, the service sector also registered a negative growth, that is minus 3.14%. All these things are related to the very negative impact of the COVID-19 pandemic. So coming to the first sector, the primary sector of an economy, that is the agriculture, we have to analyze the agriculture department, the rural poverty, as well as the rural poverty and development department.
So out of 21.38%, that has to be given by the agriculture and allied sectors. We have the soft sectors like the sister disciplines like the livestock, the animal husbandry sectors, that is producing 13.62%, while fishery giving, sorry, the crop sector providing 13.62%, while livestock producing 3%, fishery sector provides 2.33%, and forestry sectors providing 2.44%. So under the agriculture division, we have the primary or the chief contributions has been rendered by your crop, then your livestock, then your forestry, then the fishery, right? So please at least remember this data. All you should not go very in detail about the factuals, but you should have some knowledge which sector is giving maximum amount of revenue to the state exchequer, because we are promoting and we are revamping the traditional mode of agricultural practices, because we have to sustain a large populations, we have to feed them. So we have enacted various programs uh, in agricultural sectors, that is the national food security missions. Under these missions we have to feed a huge number of population. So we have to simultaneously in parallel with this growing population, so we have to produce more numbers or more amount of food. That's why we have ensured the integrated farming system, intensive agricultural program, mission for development in horticulture MIDH, very important program under the horticulture department, and technology mission on cotton, technology mission on sugarcane. So all these programs are implemented in the state of Odisha with full faith and full gear. So to check any malpractices, to check the good governance in these programs, we have initiated the 5T initiatives. So under the 5T programs, these programs are gaining momentum in terms of implementations. Similarly, the government of Odisha also highlighting the crop diversifications, because in some areas of our state, paddy is not suitable. In some area of the state, sugarcane is not suitable. So we have to pick which crop is best for which region. So in these conditions, we have to go for the crop diversification and crop intensifications. Like if we are only focus only on paddy, then if there is any outbreak from the locust, or if any outbreak from the cyclone occurs, or any drought condition may occur, then total paddy productions may goes away. So we have to ensure some other crops along with the paddy, some horticultural crops, some other cereals along with livestock farming. So this type of farming is known as mixed farming. So here the risk problem will be lesser. Coming to the specific thing that those are running under the agriculture and allied department. So here there is a new scheme, that is the Balaram scheme. Right, this Balaram scheme was institutionalized by the government of the Odisha in the year 2020 by the Department of the Agriculture and Farmers Empowerment. Right, its chief objective was to augment or to increase the flow of institutional credit, loan दिया cash दिया institutional credit to the farmer, marginal farmer, landless farmers, and this program is running in correlation or in line or in the same side by side or in the support from the NABARD. So this is all about the Balaram scheme. Second, the Samruddhi scheme. So this Samruddhi is also known as the Agriculture Policy 2020 of the Odisha. So this Samruddhi, the agricultural policy that more over focusing on the diversity, market linkage, value chain, and technology. So diversity means crop diversity, we have to emphasize. Market linkage, so the production to the market, we have to eliminate the middleman concept. We have to ensure such a system where the
true producer, the actual producers will get a fair and remunerative price, strongly implementing the MSP system, e marketing system, right? Then the value chains and technology. Product the establishment of the new concept, the mega food park concept, sea food park concept. All these things we have to ensure so that the value chain and technology can be sustained. Second, the very famous the Kalyan schemes, where in every crop season some amount of money is given to the farmer's account. So the full form here is the Krushak assistance for livelihood and income augmentations. Simultaneously, to increase or to promote the entrepreneurship skills in the field of agriculture in the allied department, we have a scheme that is known as Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana. Right. So this Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana is regulated as it monitored by the agency is there, that is which is known as apical. Right. So this apical is closely observing the status of agriculture and the entrepreneurship in the sector. Second, we have the Odisha millet missions, farm producers organization policy, and under the paddy, the Bargarh district tops these positions in terms of productions, followed by Kalahandi and Subarnapur. Simultaneously, coming to the animal husbandry sectors, the milk productions of the Odisha has grown this amount to this amount in the year 2019 and 20. So all these things are only due to possible due to the OMFED, the white revolutions, and intensive high valued genetic cow in the state of Odisha. Coming to the meat sector and the egg sectors, the meat sector is the availability of the milk per person per annum is 4.29 gram. Similarly, for the egg productions, we have 50 egg per annum in the 2019 and 20. So all these schemes are there under the agriculture and the allied department. Coming to the fishery sector, the out of total fisheries productions, the freshwater fish constitutes the 67%, while the brackish water fish, that is the lunia macho only 14%. Coming to the marine fish, only 19%. Simultaneously, the per capita consumption of the fish that has been grown from 15.4 kg per person per year to the 16.2 kg per person per year in the year 2019 and 21. Coming to the forestry sector, the forest cover growth, very important here, growth, not the area, what is the growth, was highest in the Kandhamal district, that is the 9.6%. Similarly, which is followed by the Mayurbhanj, Sundargarh, Sambalpur, Raigad and Malkangiri. Next, coming to the very important aspect of the economy, that is the rural poverty and the development. Right. So why the rural poverty exists? We have a higher economic growth. Still, we are categorized on the very rural or very poverty status, receiving a poverty status, poor status. So here, the chief objective of the economic growth, the mukhya lakshya economic growth to eradicate, very important, please students write it, to eradicate poverty को नष्ट करिया दरकार, to eradicate destitution, to eradicate unemployment problem, to eradicate the backwardness problem. जदि आमर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रोची, still we are under the poverty basket, then some problems are there in the system, right? इकोनॉमिक ग्रोथ हो जदि still poverty रोची, then आमर इकोनॉमिक ग्रोथ रे आमे जानि पाइबा कि some elite section of the society, जे टॉप लोक जो मन धन लोक सेमान को पाखरे ही वेल्थ रा बेसी कंसंट्रेट हो जाउची कंपेयर टू द मास ऑफ द पीपल. So this is a kind of polarization of the concentration of the wealth. So this type of growth indicates the higher percentage of inequality in the society, right? So the government of the Odisha has taken various policy measures, various flagship programs to reduce the poverty.
especially rural poverty. Another thing, why आम ओडिशा बीपीएल संख्या अधिक कहीं आम ओडिशा आम ओडिशा कहीं पॉवर्टी कहीं बीपीएल सेक्शन से आम अधिक लोक अच्छा गोटे सिंपल जिनस है आपंकर ओडिशा अराउंड 60% लोक एग्रीकल्चर उपर बास करती एग्रीकल्चर उपर से डिपेंड करते एग्रीकल्चर इज हाईली वोलाटाइल इट इज सब्जेक्टेड टू द एनवायरमेंटल रिस्क मॉनसून फेलियर रिस्क लोकस्ट अटैक जो पंगपाल अटैक करुँच भारियस प्रोब्लेम्स जो एग्रीकल्चर से अफेक्ट हो 60% लोक सेकेंड जिनस ओडिशा आपंकर 83% लोक गाँव रुहति विलेज रुहति विलेज रहा माने से माने टाउन को कम माइग्रेशन करुँच माइग्रेशंस जो कम रोचे बेसी लोक माइग्रेशंस कम रोचे मैंने गाँव अधिक लोक रोचे से गाँव में से अधिकांश लोक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट करें किसी अननेचुराल अनआवोइडेबल सर्कमस्टेंसेस पड़े आसमें आहरी एग्रीकल्चर फेलियर हो यही लोक गरीब रही तो द बेस्ट वे टू पुल देम आउट फ्रॉम दिस पॉवर्टी बास्केट इज टू आमको माइग्रेशंस को आम एनहांस इनक्रीज करा पड़ो नॉट आउटर स्टेट इनर डिस्टेंस माइग्रेशंस करा पड़ो से आमको सर्विस सेक्टर को एम्फासाइज करा पड़ो एमएसएमई सेक्टर को एम्फासाइज करा पड़ो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को आमको हास्टेन करा पड़ो सेमती जाइना लोक गाँव टाउन को आसवे से सर्विस सेक्टर सहित एसोसिएटेड हे सो दैट और रेमिटेंस भी आप बढ़ो गाँव को पैसा पठे रेमिटेंस बढ़ो सो दैट एमती हेले जाइकिना रूरल पॉवर्टी बहुत मात्रा कमिबार चांसेस अच्छी राइट सो कमिंग टू द रूरल पॉवर्टी इन ओडिशा गोटे वेरी गुड इंडिकेटर 25% रिड्यूस होती फ्रॉम 2004 and 5 to 2011 and 12 राइट सेमिति ड्यू टू दी प्रधानमंत्री आवास योजना एगुड़ा आमको सोशल सेक्टर को आम एनहांस करा पड़ो गोटे स्टैंडर्ड लिविंग आम लोक एनश्योर करा पड़ो से आम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बिजु पक्का घर योजना राइट बिजु पक्का घर माइनिंग एरिया माइनिंग योजना निर्माण श्रमिक पक्का घर योजना ये सब योजना होगा आम लोक स्टैंडर्ड मोड ऑफ लिविंग आम प्रोवाइड करूँ साइमल्टेनियसली वी हैव ensuring a 100 days of manual work through the प्रधानमंत्री नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स MGNRGS रे आम करूँ so the employment जो आम जी स्टेटस देखा जा so the employment households in the year 2019-20 that is upper 36.9% आम देखुं राइट सो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कहीं हाई रोचे बिकॉज आम एग्रीकल्चर उपरे बहुत डिपेंडेंट सिमिलरली एग्रीकल्चर इज नॉट मॉडर्नाइज्ड इट इज ट्रेडिशनल इन नेचर लो माइग्रेशंस रोचे सो दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज योर डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जब आम ये स्टाटिस्टिक्स देखा जा एम्प्लॉयमेंट स्टाटिस्टिक्स देखिए देन अर्बन एरिया रे मोर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कंपेयर टुवर्ड्स रूरल पॉकेट्स राइट सो अनएम्प्लॉयमेंट को आम टैकल करें आमको स्किल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करा पड़ो वोकेशनल ट्रेनिंग को बढ़िया पड़ो राइट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी एक्सप्लोइट करा पड़ो डेमोग्राफिक डिविडेंड मान 18 ରୁ 60 वर्ष भितर जिते भी लोक अच्छा आम स्किलिंग करा दरकार एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्किल इम्पैक्ट करा दरकार राइट ये सब जिन खाली गवर्नमेंट एक्टिविटी कले हेनी से प्राइवेट कंपनी को आम पार्टिसिपेट करा दरकार ये सब जिनस अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मात्रा कमे दे पार सेकेंड टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट इकोनॉमी दैट इज द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और इन दिस सेगमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड द मिनरल रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट ऑफ द ओडिशा राइट सो इन दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर आम जानते द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोवाइडिंग 36% of the revenue to the state gross domestic product यदि कंट्री को देखिए कंट्री रे आमर मात्र 26% नेशनल इनकम को से प्रोवाइड करुच्ची सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए मेजर ड्राइवर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट आम जानते
आमर ओडिशा रे 36% इंडस्ट्री 42% अराउंड दूसरी आपन सर्विस बेटर टू से ओडिशा इकोनॉमिक इज सर्विस लेड एज वेल इंडस्ट्रियल लेड इकोनॉमी राइट सो इंडस्ट्री जदि आमर जदि बेसी डेवलप होजी आमर सेतिर कोन आमर बेनिफिट होची तीन चारटा इंपोर्टेंट बेनिफिट आम एथुर पाउछन मन रखंतु फास्ट है इफेक्टिव मोबिलाइजेशन जदि आम एथुर बेनिफिट देखिया जदि इंडस्ट्री बेसी डेवलपमेंट हो तो रॉ मटेरियल बेसी एक्सट्रैक्शन सब मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड इफेक्टिव यूज ऑफ द रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल बेसी बाहर बेसी इफेक्टिवली यूज है तो ताको काम करे लोक भी सेमती दरकार है तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्स आल्सो फर्स्ट सेकेंड यदि इंडस्ट्री बेसी डेवलप है यदि मोर अमाउंट यदि मोर डेवलप है इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट जेनरेशंस यदि इंडस्ट्री बेसी डेवलप है देन इंक्रीज इन द डोमेस्टिक सप्लाई इंडस्ट्री बेसी डेवलप है देन आम गोटे सस्टेनेबल चिरस्थायी सस्टेनेबल सप्लाई चेन रे पार्टिसिपेट करि परिबा सप्लाई एंड एक्सपोर्ट फॉर ओडिशा सो ये सब जिनस आमको एसेंशियली दरकार फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट राइट सो इंडस्ट्री जो जिनस कहली सो द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री गोटे पॉजिटिव ग्रोथ अच्छी 3.6% कंपेयर टू दी 0.92% एट ऑल इंडिया लेवल सो इंडस्ट्री अंडर आम चार्टा इंपोर्टेंट सेक्टर को आम कैटेगराइज कर फर्स्ट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग थर्ड ईयर कंस्ट्रक्शन वर्क फोर्थ ईयर इलेक्ट्रिसिटी इन द वाटर गैस प्लीज स्टूडेंट्स डू मेंबर बेटे एग्जाम रे पचार दो इलेक्ट्रिसिटी आपन को सेक्टर आसुचे नेवर कॉम्पीट विथ द सर्विस सेक्टर और एनी एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर out of the four sub sectors under the industry the manufacturing sector which is providing the larger amount of revenues to the state GDP right जदि आप देखा जी आमर गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशंस देजी से गोल नंबर 9 गोटे अच्छे से गोल नंबर 9 कहूँ वी हैव टू बिल्ड ए रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर First, second, we have to promote inclusive and sustainable industrialization. So, goal line को हमको रेस्पेक्ट देगा पड़े से हमको इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने पड़ो राइट अनदर इंपोर्टेंट जिनस द स्टेट अकाउंट फॉर द कंट्रीज आम जानते आम स्टेट सब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रोमाइट से प्रोडक्शन करुच्ची देन निकेल देन 51% बॉक्साइट 33% आयरन ओर 43% manganese ore and 24% coal reserves in the year up to the date 1st April 2019. Are you getting? So, our state Odisha is leading. So, first position रखुची in chromite, in iron, in bauxite, in coal and in the manganese ore. Number 1 position ये 5टा जिनस रे रखुचंती. Right then coming to the same thing the Odisha contributed around 25% of the major mineral produced in the country so हम देश जिते भी मिनरल प्रोडक्शन होची 1/4 हम ओडिशा रो ही जाउची दैट्स व्हाई आमे से मिनरल एक्सट्रैक्शंस मिनरल क्वेरिंग माइनिंग ए सब जिंस को आमे गुटे स्ट्रीमलाइन करिया पे आमे गुटे इंटीग्रेटेड माइंस मिनरल्स मैनेजमेंट जाको सॉफ्ट I3MS प्रोजेक्ट बोली कहउछंती इटा 2010 मसीह इम्प्लीमेंट कराइला बाय द स्टील एंड माइंस डिपार्टमेंट यार चीफ एम थिला ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट एज वेल इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द सुपरविजन ऑफ मिनरल ट्रांजिशंस आ माने गोटे मिनरल ये जगह प्रोडक्शन होची मिनरल ये जगह यूटिलाइज होची से बहुत सारा कल कारखाना अच्छी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी भितर किसी भी जमी मिस मैनेजमेंट न हम मिडिल मैन से भितर बेसी फायदा न नहीं सो फ्रॉम द सोर्स टू द एंड यूजर्स अंडर दिस I3MS प्रोजेक्ट इट विल क्लोजली सुपरवाइज any irregularities or any illegal activity जदि चलुचे ताको ए प्रोजेक्ट जरिया रे ताको चेक करिवो
Similarly, এই সব জিনিসকু আমরা ক্লোজলি মনিটর করছি ওড়িশা মাইনিং কর্পোরেশনস, the apex institute in the state of Odisha to monitor all these things, all the mining related things. So the annual turnover, profit and dividend paid by OMC were this much, this much. So the turnover is around 4,000 crore and the profit is 1,137 crore. So it is a huge profit making organization of the government of the Odisha. So as well as coming to the steel industry in the state of Odisha, we have two important public sector undertakings with respect to the steel and stainless steel productions. One is at Rourkela, the Rourkela steel plant, another is Nilachal Ispat Nigam. Two important sector. Please students do remember. Similarly, coming to the aluminium productions, there is coming to the aluminium productions, we have the ore for this aluminium is the bauxite. Remember it. So there is a national PSU, PSU, that is Nalco, National Aluminium Company. At say Nalco ru amro highest amount of aluminium production houchi, right? Besides this Nalco, two other PSUs, that is Hindalco and Balco, are also there for the production of the aluminum. Compared to the private players, we have only one private player, that is Vedanta Limited, right? So in order to attract more amount of foreign investors in the state of Odisha to exploit the mineral resources, so we have conducted a program, Make in Odisha initiative in the year 2018. So here the strategy for this sector would be promote domestic industry, reduce dependency and feed into the Make in Odisha initiative. Then coming to the very important things under the MSME and the electricity categories. So under here, so repairing in the service sectors providing 62% units of the employment generations. So coming to the power sectors, we have the industrial use, domestic consumptions. So the industrial and the domestic consumptions, they together share about 49.60 of the total power consumption in the state. Rest the powers are being supplied to the other states through various DISCOMs, that is the power distribution companies, right? So the government of Odisha in the year 2019 and 20 has achieved a milestone in terms of 100% village electrifications, right, in the state of Odisha. So in the electrifications, we have the major milestones that has been achieved through three important schemes or three important flagship schemes of the government of the Odisha as well as the government of the India. So the first one is the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutkaran Yojana. Second is Biju Saharanchal Vidyutkaran Yojana. Again I am repeating, the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutkaran Yojana, the Biju Saharanchal Vidyutkaran Yojana, as well as the recent flagship program of the Modi government, that is Saubhagya schemes. Saubhagya, that is Sahaj Bijli Har Ghar Yojana. So this Yojana envisages the 100% or better to say the universal household coverage in terms of electrifications. So here the Odisha is the first state in the India to notify Odisha Energy Conservation Building Code. Please students do it, remember. Coming to the industrial development and the possible ways those government has taken yet. So गोटे जिनस मन रखु आमको इंडस्ट्री डेवलप करार अच्छी, वी हैव टू डेवलप द इंडस्ट्री. से गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फास्ट स्टेप से कौन कला, सी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयारी कला. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को धर सपोज एठी गोटे कॉरिडोर, एठी गोटे कॉरिडोर, एठी गोटे, ए कॉरिडोर से थ्रू रेल थ्रू रोड कनेक्टिविटी से जॉइन कला. मोर प्रिसाइजली द रोड कनेक्टिविटी, राइट. सो जमती आप झारसुगुड़ा टू आपंकर राउरकेला बिजु एक्सप्रेस वे थ्रू कम्युनिकेशन से लिंक कला. दैट्स वाई इंडस्ट्री गोटे एक्सपेक्ट से डेवलपमेंट है. सेकेंड कौन कला गवर्नमेंट से मोर नंबर ऑफ FDI से आनला, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से प्रमोट करने
लाइक इज ऑफ डूइंग बिजनेस करने पे सॉरी फॉर मोर नंबर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने को चेष्टा कले से जो गवर्नमेंट सब भारियस थिला जो किछि रूल्स रेगुलेशंस थिला ताकू से सिंप्लीफाई कला ए सिंप्लीफिकेशंस कला परे हमर इज ऑफ डूइंग बिजनेस जो स्टेटस हमर बढ़ी गला आगुरु भारियस सॉफ्टवेयर सब सिंगल विंडो मेकानिज्म्स थिला जेमिति कि गो केयर गो अंडरस्कोर स्माइल गो प्लस एमती थिला ए सब ओडिशा गवर्नमेंट नो देयर सिंगल विंडो सिस्टम रहबो जोडा कि इजीली से हमर एमएसएमई को से आनी परिबो हमर इज ऑफ डूइंग बिजनेस हासिल्स फ्री ट्रांजैक्शंस हासिल फ्री लाइसेंस राइट से मन पाई परिबो फॉरेन कंपनी दैट इज द गो स्विफ्ट प्लीज रिमेंबर इट थर्ड कोन कला गवर्नमेंट आ प्राइवेट सेक्टर से हाथ को हाथ मिसिकी हैंड को हैंड मिसिकी से माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड रे बहुत सारा से इंडस्ट्री डेवलपमेंट कला मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव्स प्रति वर्ष से तैयारी कला राइट तापरे ओडिशा स्टार्टअप पॉलिसी जो नुआ करी किछि इंडस्ट्री किछि स्टार्टअप तैयारी करबे तांको बहुत सारा जिंस जेमति कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो जेमति कि लो इनपुट लोन हो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन हो सो एमती सब ओडिशा स्टार्टअप पॉलिसी रे से हमने से तैयारी कले फाइनली स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे 5T प्रोग्राम जोड़ा कि आमर ट्रांसपेरेंसी को एनश्योर करिवो ट्रू गवर्नेंस को एनश्योर करिवो टाइमली वर्क को सी करिवो फाइनली जेमती प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हे परिवो इन द इंडस्ट्री सेक्टर्स सो ए सब जिंस हमर इंडस्ट्री सेक्टर रे द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा नै चंती कमिंग टू द अर्बन डेवलपमेंट राइट इन द ईयर 1950 जता हम देश रिपब्लिक हेले स्टेटस पाइले तत्ता बेला हमर 4.06% हमर अर्बन लोक रहउतले राइट तो 2011 पळे आसला ना हम पाखरे 16.6% रहले मात्र 60-70 वर्ष रे हमर 12% ग्रोथ हेजी व्हिच इज वेरी नॉमिनल बहुत कम से तेरा हमर रहउछि स्टिल इंडिया स्टिल ओडिसा रे 83% पॉपुलेशंस डिपेंड करछन्ती जो रहउछन्ती हमर गाँ गहली रे रूरल पॉकेट से रहउछन्ती सो ए रूरल लोक ए रूरल पीपल को आम सोशल आम दुटा इंपोर्टेंट जिनस एनश्योर करवा दरकार राइट सो सॉरी कमिंग टू अर्बन डेवलपमेंट सॉरी मु अर्बन विषय कहूँ सो अर्बन डेवलपमेंट वी हैव टू मेक देयर लाइफ्स वेरी कंफर्ट वेरी इजी से आम से 24/7 सेफ ड्रिंकिंग वाटर देवाई ड्रिंकिंग फ्रॉम द टैप मिशंस आम इम्प्लीमेंट कले राइट सेकेंड रे आम पाखे गोटे जल साथी पुरिया भुवनेश्वर से आम कले देन 5T प्रोग्राम SDG गाइडलाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइडलाइंस को आम स्ट्रिक्टली फॉलो करें स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आनिले हाउसिंग स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जिन ग्रामीण थिला इन अर्बन energy efficient street lighting system smart city missions projects right efficient and sustainable urban water supply projects drink from the tap mission Vasudha very important scheme right the pipe drinking water तार फुल फॉर्म बक्सी जगबंधु assured water supply to habitations Vasudha scheme sorry it is DHA Vasudha schemes and convergence with other schemes like UID SSMT, Amrut, District Mineral Foundations, OMBADC, Odisha Mineral Bearing Area Development Corporations, Odisha Mineral Bearing Area Development Corporations, DMF, the District Mineral Foundations, to ensure water through universal coverage of pipe water supply, revamping of urban road transport system, urban sanitation program, गोटे जो भूमिहीन लोक नवीन पट्टनायक देले सब जगह पट्टा देले लैंड राइट्स सब देले जगह मिशंस वेरी इंपोर्टेंट जगह मिशंस 5 टंकिया जो खाଇବା देले लोक कहीं भोकले रही आहार प्रोग्राम DAY दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशंस फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी
of the urban poor households and modernization of the CCSCs are initiated. बहुत इंपोर्टेंट जगह मिशंस पई हम ओडिशा को यूएन हैबिटेट अवार्ड मिलथिला. प्लीज स्टूडेंट्स डू इट रिमेंबर. आहार प्रोग्राम जो 5 रुपीज रे गोटे मिल आपको मिलुछि. That's why Odisha won the World Habitat Award for global recognition for ambitious unique initiative in the Jaga missions for granting land rights certificates to urban poor living in slums. जो मैंने बस्ती बासिंदा लोक मान को हम लैंड राइट सर्टिफिकेट जमीर पट्टा तंको दिया गला अंडर द जागा मिशंस. So coming to the third sector, that is your tertiary sector, right? एथिरे हमरो hotels, restaurants, roads, banking, insurance, ये सब जिनस दि हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब जिनस आपनकर सर्विस सेक्टर सहित एसोसिएटेड अछंती. सो देखिए गले सर्विस सेक्टर इज प्रोवाइडिंग 42.5% रेवेन्यू. सो ए सर्विस सेक्टर जत्ते मु जिनस कहली दुटा इंपोर्टेंट सेक्टर अंडर द सर्विस ट्रेड और रिपेयर जोटा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवेन्यू दियंती. जेंति एग्रीकल्चर रे फास्ट बेसिक के दउची आपनकर क्रॉप, सेकंड के दउची एनिमल हस्बेंडरी. सेमिति अंडर द सब सेक्टर ऑन द सर्विस सेक्टर्स वी हैव द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस टू द स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द ट्रेड एंड रिपेयर सेक्टर. सो जत्ते भी सारा जिंस हो आम ओडिसा रे आम घर बहुत सारा जिंस अछि, बहुत सारा ब्यूटीज एंड बाउंटीज, बहुत सारा हेरिटेज, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारा फिल्म टूरिज्म, बहुत सारा जिनस रही, बहुत सारा आदिवासी लोक रही डिफरेंट यूनिक टाइप लाइफ स्टाइल. ये सब जिनस को आम टूरिज्म अंडर रखिपर. देन बहुत सारा फॉरेनर्स आम राज्य को आसबे. आम फॉरेन एक्सचेकर आमर जो स्टेट आमर पैसा बढ़ियो, आमर रेवेन्यूज आमर जनरेट हम. सो वी हैव टू गिव ए स्पेशल फोकस टू द टूरिज्म. जो टूरिज्म देखिया गले प्लीज स्टूडेंट्स डू राइट. टूरिज्म डिफरेंट टाइप रही पारे. फास्ट आम ओडिशा रे बीच अच्छी, लेक अच्छी, प्लस बहुत सारा वाटरफॉल अच्छी. जमी बीच है आपंकर कोणार्क रे हो, पुरी रे हो, गोपालपुर बीच हो, चांदीपुर बीच हो, लाइक अंशुपा लेक हो, आपंकर चिलिका लेक हो, वाटरफॉल खंडाधार हो, राइट. बहुत सारा वाटरफॉल ये सब ह्यूज नंबर्स ऑफ टूरिस्ट से अट्राक्ट हो पारे जदि आम मॉडर्नाइज करवा. राइट. सेकेंड वी हैव ए ह्यूज नंबर ऑफ हेरिटेज. पुरी आप कोणार्क जमी आप भुवनेश्वर की टेम्पल सिटी को आज बहुत सारा एमती मंदिर नृसिंहनाथ, हरिशंकर सब रिजन्स किसी मंदिर रोचे. तो से मंदिर को हेरिटेज को आमको प्रिजर्व करके वेल डेकोरेटेड करके आम फॉरेन टूरिस्ट को आम अट्राक्ट कर. जदि वन्स द टूरिस्ट जदि गोटे जगह को आसिले टूरिज्म स्पॉट होगा तो सहित एसोसिएटेड होटेल, रेस्टोरेंट्स, रोड्स सो आंसिलियरी स्ट्रक्चर सब डेवलपमेंट हो. राइट. से डेवलपमेंट है मैंने सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली डेवलप हो. राइट. ट्रेड भी आमर बढ़ियो. थर्ड है वाइल्ड लाइफ. एबे देखिए गोटे गवर्नमेंट ओडिशा गोटे इको रिट्रीट गोटे न्यू कॉन्सेप्ट आसुची. इको टूरिज्म न्यू कॉन्सेप्ट आसुची. आम वाइल्ड लाइफ सेक्टर जमीक बहुत सारा रोचे आमर सातकोशिया हो, आप सिमिलपाल हो, राइट. बहुत सारा आम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रोचे, नेशनल पार्क रोचे. आम ताको मॉडर्नाइज करके टूरिस्ट आम अट्राक्ट कर. बिसाइड्स दिस वी हैव ए वेरी ह्यूज नंबर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम. जमी आप पिपिली चांदुआ है, सम्बलपुरी साड़ी है, ये सब जिनस को प्रमोट कर. बिसाइड्स दिस वी हैव ए यूनिक फेयर एंड फेस्टिवल्स. पुरी रथ यात्रा है, कुमार फेस्टिवल्स है, जमी नुआखाई है, आपंकर बरगढ़ धनुयात्रा है, ये सब को आमको वर्ल्ड लेवल रे फेमस करने पड़े. सो दैट वी हैव ए वेरी गुड नंबर्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ओडिशा. देन अनदर थिंग इज स्पोर्ट्स टूरिज्म. आम जानते रिसेंटली आम ओडिशा को सारा भारत वर्ष स्पोर्ट्स कैपिटल कहुच्छी. दैट्स ए स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहुच्छी. आम ओडिशा से सक्सेसफुली आम 2018 रे हॉकी वर्ल्ड कप कंडक्ट करते. रिसेंटली सुंदरगढ़ रे राउरकेला रे नवीन पट्टनायक जो आसते सुंदरगढ़ विजिट रे से सी आमर वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम को सी इनागुरेट करते. राइट. सो आम यहाँ स्पोर्ट्स टूरिज्म मैंने भी करें. अनदर थिंग इज एथनिक टूरिज्म.
आम ओडिशा रे बहुत सारा नेटिव लोक अच्छा जमती कि विथ रेफरेन्स टू योर ट्राइबल पीपुल दे हैव डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ स्टाइल सब जिन डिस्ट्रिक्ट हाट डिस्ट्रिक्ट जीवार मान ही डिस्ट्रिक्ट तेणु आम देखिकिना टूरिस्ट मैंने आसिक स्टडी करें सो वी हैव टाइप्स ऑफ दैट इज नॉन एज एथनिक टूरिज्म लाइक वी हैव आल्सो हैव द मेडिकल टूरिज्म आमको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स तैयारी करा पड़ो एम्स लाइक हॉस्पिटल्स तैयारी करा पड़ो जमीती कि बहुत सारा पेशेंट्स आम ओडिशा को आसवे आउ से माने क्योर होना जी दैट इज ए काइंड ऑफ मेडिकल टूरिज्म एनदर थिंग इज फिल्म टूरिज्म माने आमको एमती किसी स्पॉट को डेवलपमेंट करेंगे जोड़ा कि फिल्म शूटिंग हो पार जमीक आप साउथ रे जदि आपंकर रामोजी फिल्म स्टेशन अच्छी सेमती भी किसी आम ओडिशा जो एत नेचुरल जिनस अच्छे आम सब जिनस को भी आम एमती मॉडर्नाइज वे एमती वेल डेकोरेटेड करें जमी फील्ड टूरिज्म भी स्थान पाइपर एत सारा जिन टूरिज्म उपर अच्छी तो ओडिशा हैज ए वेरी गुड पोटेंशियल टू एक्सप्लोर ऑल सॉर्ट्स ऑफ टूरिज्म then coming to the service sector then coming to the main topic so here it provides the 42.5% the trades repair hotels and restaurants is the leading subsector under the service sector with 22% to this 22% of the service gross state value additions. We have the coming to the road sectors we have 20 airports and 16 helipads across the state. So the state has taken the proactive steps for implement of the Raurkela Airport, Utkala Airport and Jaipur Airport with full-fledged under the RCS Udan Scheme. Right? उड़े देश के आम नागरिक स्कीम. Then we have a very good teledensity. This 76.46% against the national average 87.37. Still we are lagging behind the national average. So the priority sector advances in total advances मन रखते गोटे बैंक अच्छी से बैंक रे जितने सब लोन तर 100 टंका गोटे बैंक लोन दूसरी तार बैंक गाइडलाइन अच्छी यू हैव टू डाइवर्ट 100 टंका टोटाल लोन दूसरी तेनाली आपको 40% प्रायोरिटी लैंडिंग देवा पड़ो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करा पड़ो वेरी इंपोर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मान प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री एजुकेशन एसएचजी ये सब फार्म मेकानाइजेशंस ये सब सेक्टर को आपको 40% लैंडिंग करने पड़े प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग राइट एमएसएमई सो से देखा गले प्रायोरिटी सेक्टर जो एडवांस देखा जाए आम ओडिशा 59.34% अच्छी जोटा कि 40% रहा कथा आम ओडिशा से बहुत फार आवे से रही सो ओडिशा इज द फर्स्ट स्टेट वेरी इंपोर्टेंट इन द कंट्री टू अडॉप्ट द मॉडल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप to extend banking services in unbanked areas for the financial inclusions. So हम एसएचजी स्त्री लोक एसएचजी आम रही आम बैंक द्वारा लिंकेज कर बैंक बहुत चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन दूसरी जमी एसएचजी मैंने फाइनेंशियल भाइबल होती डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर राइट से आम गोटे डिपार्टमेंट अच्छी दैट मिशन शक्ति डिपार्टमेंट या वर्क कर राइट ये सब जिन आम ओडिशा फर्स्ट स्टेट जी कि आडप्ट कर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक सहित लिंकेज करने इन अनबैंक्ड एरियाज. Then coming to the very important sector of the economy, the social sector in the human development. So that is a very good saying. तो अच्छी जदि आमर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी जिते भी इंक्रीज हेले भी जदि आम सोशल जस्टिस न रोची देन दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मीनिंगलेस. से आम ह्यूमन को कैपिटल आम ट्रीट करा दरकार राइट. आम सोसाइटी रे गोटे लिवेबल कंडीशंस गोटे गोटे डिसेंट लाइफ गोटे डिसेंट लिवलीहुड को आम इनश्योर करा दरकार. सो coming under a very sensitive segment that is social sector, human development and the quality of life, very important aspect of the economy. So life expectancy at birth is 64.8 years during the 2019 to 2019, but it rose to 69.3 years during 2014 to 18. कहीं आमर सेमती मेडिकल फैसिलिटी आम बढ़ुचे आमर डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो आम बढ़ुचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आम तैयारी करुचे रिजनल डिस्पारिटी को करने आम अनएक्सेसिबल एरिया मेडिकल फैसिलिटी करुचे टेलीमेडिसिन दौरान अल्टरनेट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन दैट इज होमियोपैथी आयुर्वेदिक ये सब डॉक्टर्स को आम से अपॉइंटमेंट कर सब जिन भाव आमर लाइफ एक्सपेक्टेंसी टी बढ़ी जाइए. सेमती इनफांट मोर्टालिटी रेट जो शिशु मृत्यु हार कहते 40 whereas
the rate of India is 30. Still आमे infant mortality rate आमर positions टिके भलो नहीं compared to the national average. सेमती maternal mortality rate आमर 150 रोची जोड़ा कि national average रू 113 रोची. सेथि पई आमे जो रिमोट एरिया हॉस्पिटल्स को आमे मॉडर्नाइज करवा दरकार. से डॉक्टर्स को आमे अवेलेबल करवा दरकार. सेकंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल डिलीवरी हेबा पे आमे प्रमोट करया कथा. ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम को आमे एनश्योर माने बेसी रामपांट लेन यूज करया ताको बेसी स्ट्रेंथन करया दरकार. Right, so the birth rate in the Odisha is 18.2 against the national average 20. So our Odisha comparatively कम explosion of the populations. So the gross and coming to the education sector, the gross enrollment ratio जो छुआ जो ना लेकोचंती जो स्कूल करिकुलम जो ना लेकोचंती रेशियो at primary upper primary level 102% and 97.99%. So ଆମର बहुत भलो स्टेटस अछि इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द प्राइमरी लेवल. So आम ड्रॉप आउट द बेसिक छुआ ना लिखुंती दैट इंडिकेट द ड्रॉप आउट रेशियो इज वेरी लेस. तो देखो स्टूडेंट और द पीपल टू टीचर रेशियो यदि प्राइमरी सेक्टर देखिया गले प्राइमरी स्कूल देखिया गले इट इज 18.1 18टा छुआरे गोटे मास्टर टीचर अछंती. कमिंग टू द प्राइमरी अपर प्राइमरी लेवल इट इज 20.20:1 इन द ईयर 2019 and 20, which is better than the right to education जो गाइडलाइन प्रोवाइड करूची नॉर्म्स देइची इट इज 13.1 में 30टा छुआरे गोटे टीचर रहबा कथा एट द यूपी स्कूल एंड अपर प्राइमरी स्कूल रे 35.1 35टा छुआरे गोटे टीचर रहबा कथा. बट हम ओडिसा रो स्टेटस बहुत बेटर अछि व्हिच इज माने मोर अपर as per than the prescribed norms prescribed under the RTA right to education. Then coming to the governance reform and the institutional building. So आम गोटे सुशासन व्यवस्था को हमको एनश्योर कराई पड़ो. गुड गवर्नेंस हम पब्लिक को एनश्योर कराई पड़ो. राइट द गवर्नेंस जते स्कीम्स जते प्रोग्राम्स जते रोची जति गवर्नेंस जति एडमिनिस्ट्रेशन ठीक न रहबो देन से ट्रू टेस्ट ऑफ द गवर्नेंस पब्लिक पाई परिबे नाही. सेथि पई हमको जते भी सु पॉलिसीज तैयारी करा होची गुड जते भी ताको गुड गवर्नेंस को आमे इंप्लीमेंट करा चाहते सेथि पई सब पॉलिसीज गुडा सिटीजन फ्रेंडली हेबा दरकार. सिटीजन को सिटीजन्स केयरिंग हेबा दरकार एज वेल एज रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशंस रहबा दरकार. द ब्रॉड विजन्स ऑफ द 5T जो पांचटा इंपोर्टेंट फिलोसॉफी को लेकिन 5T तैयारी करा दैट इज द टेक्नोलॉजी को हमको यूज करे पड़ो इन एवरी एस्पेक्ट्स इन एग्रीकल्चर इन योर इंडस्ट्री इन योर सर्विस सेक्टर. टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करे पड़ो नॉट द ट्रेडिशनल मोड ऑफ वर्किंग. सेकेंड द टीम वर्क आमको समस्त मिलमिशी काम करिया पड़ो. ट्रांसपेरेंसी नो करप्शंस टाइम गोटे टाइम लिमिट आमको से काम को कंप्लीट करिया पड़ो. सेमिति हे साल पे ई चारटा टूल्स हम यूज करबा देन अल्टीमेटली इन एवरी सेक्टर्स हम ट्रांसपेरेंसी डिजायर्ड ट्रांसपेरेंसी हम पाई परियो. ए सब जिंस को गवर्न करूची मो सरकार स्कीम्स. Right, seventy delivery of the public service through Odisha Right to Public Services Act 2012, Right to Information Act 2005, Law and Order through Crime and Criminal Tracking Network System CCTNS, and Emergency Response Support System ERSS. Right, tackling corruptions through registration of the cases, maintenance of transparency through e-Abhijog, measure e-governance and ICT interventions by different departments, improved governance through 5T and more Sarkar schemes, litigations management systems to ensure better management of the court cases. से तुम्हें कोर्ट को बर्तन मॉडर्नाइज कराउची ई कोर्ट कराउची वर्चुअल मोड कोर्ट रो हियरिंग्स गुडा को सुनाउची. देन हम तो जानछनी गत वर्ष हमर कोविड-19 जो महामारी हमरो सारा वर्ल्ड को जो व्यापीथिला ओडिसा को मध्य व्यापीथिला. सो आमे ए जो महामारी को ए जो कोविड-19 को वेरी सक्सेसफुली हम ताको हैंडल करथि. जतो नुवा क्वेश्चन जतो हम गुड क्वेश्चंस आछी हम पर फर्स्ट लाइफ इंपोर्टेंट लाइवलीहुड इंपोर्टेंस. राइट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा दे टुक तो दे गिवन प्रायोरिटी टू द लाइव्स. तो द लाइव्स द रही गला द लाइवलीहुड्स ऑटोमेटिकली रही जो लाइवलीहुड्स जदि किछ अफेक्ट होला दैट इज शॉर्ट टर्म लॉस. The lives, the one's human lives, that is human capital, the one's loss, that is irreparable loss. That's why we have given
lives as prime importance. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ steps taken ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ highlight all the things you know. So we have first taken the publicity in the digitalizations. ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଫାଷ୍ଟ କୋଭିଡ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଫାଷ୍ଟ ଦ କୋଭିଡ କେସ୍ ଥିଲା ଇଟ୍ ସଡନଲି ଇନକ୍ରିଜର ଲାଗିଲା ଅପ୍ ଟୁ ଏ ସର୍ଟନ୍ ଲେଭେଲ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବ୍ଲିସିଟି ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ କଲେ ରାଇଟ୍. डिजिटालाइजेशन ऊपर आम बेसी फोकस कले अननेसेसरी गैदरिंग्स को आम अवॉइड कले रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कले केमिति लॉकडाउन शटडाउन राइट. आम जो एरिया को है डिफरेंट एरिया कंटेनमेंट जोन रेड येलो ग्रीन जोन राइट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग राइट यही सब टूल्स को आम इम्प्लीमेंट करते जो मैंने फास्ट लाइन वर्कर कोविड वारियर आम मान्यता देते राइट. रेस्ट्रिक्शंस तापर सॉरी तापर ता सहित आम सोशल डिस्टेंसिंग राइट मास्क वेयरिंग वाशिंग हैंड रेस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक गैदरिंग्स कोविड-19 गाइडलाइंस आम रथयात्रा को भी आम सेमती कोविड-19 गाइडलाइंस को मानिक आम कंडक्ट करते. देन माइग्रेंट मैनेजमेंट आम ओडिशा जो बाहर जो श्रमिक जो भाई मैंने काम करते भाई मैंने सेफली निज स्टेट ऑफ निज ओडिशा को आणिकी फेरी आने से माइग्रेंट मैनेजमेंट करते. देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आम कोविड हॉस्पिटल एस्टाब्लिश करते बहुत सारा पारामेडिकल मेडिकल स्टाफ को आम एंगेजमेंट करते राइट. देयर कंट्रीब्यूशंस इज नॉट वर्दी से बजेट एलोकेशंस करते कोविड पैकेज स्पेशल कोविड पैकेज ये सब करते. सो आम ये सब जिन देखला आम फास्ट एथर जना पड़ी. सो लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइवलीहुड्स. देन कमिंग टू द लेसन्स व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस कोविड-19 पैंडेमिक दैट स्ट्रक होल द इकोनॉमी स्टेट्स इकोनॉमी. सो हियर वी हैव 4 different lessons. First lesson is the health is more important than wealth. First. Second, prevention is better than cure. Prevention in this term restrictions, lockdown, shutdown, mask wearing, social distancing, washing hands, all these things, the prevention protocols. Third, to protect the ill, we need to protect everyone. So protect ill जदि once गोटे पेशेंट कोविड अफेक्ट होची आमे ताको क्वारंटाइन रे रखुछंती ताको आइसोलेशन से रखुछंती ताको प्रॉपर केयर दिन सो दैट द डिजीज कैन नॉट बी आउटबर्स्ट फ्रॉम द सेंटर और फ्रॉम द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस. सेते आमे इल को प्रोटेक्ट करछंती एज वेल एज द प्रोटेक्ट ऑफ मासेस. देन एडवांस्ड प्रिपेयरनेस वेरी इंपोर्टेंट एंड प्रोएक्टिव एक्शंस जेंटू लॉकडाउन शटडाउन सो एडवांस प्रिपेयर्ड हितले सब आमे पे गुड डिविडेंड्स राइट. यही सब 4 लेसन्स आम कोविड-19 पैंडेमिक आम शिक्षा पाइले. देन कमिंग टू द हाउ वी कैन प्लेस आवर स्टेट्स इकोनॉमी ऑन द प्रीवियस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी. दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सेलरेट द ग्रोथ. वी हैव साइमल्टेनियसली obeying the COVID-19 protocol. So what we look forward? So here we have to ensure a sound governance policy. We have to adhere the norms and guidelines given in the 5T and the MO Sarkar, right. Then there will be substantial increase in the financial allocations. जो sector गुड़ाक सब badly affected होती industry, the service ये sector बेसी affect होती तो आमे से गुड़ाक बेसी focus करा दरकार. Agriculture sector भी कंपेयर टू द इंडस्ट्री एंड सर्विस लिस्ट अफेक्ट स्टिल आमको आत्मनिर्भर होगा पड़ो. से एग्रीकल्चर और एग्री एलाइड सेक्टर में आम को भी फाइनेंशियल एलोकेशंस करा पड़ो. स्पेशली हेल्थ सेक्टर को भी आमको रिवाम्प करा पड़ो एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आमको एक्सेलरेट करा पड़ो. ऑगमेंटेशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशंस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जमी लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फिशरी ये सब सब 3टा मिसिकिना गोटे एरिया चाष करा पड़ो. इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड फिशरीज मोस्ट इंपोर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द टूरिज्म सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द रेवेन्यू. सो आमको टूरिज्म को
डेभलपमेंट करा जिते आमर कोविड होता से टाइम टूरिज्म सेक्टर वाज वेरी माने एब्सोल्युटली affected by the COVID-19 pandemic. So आम again टूरिज्म सेक्टर को ताको नॉर्मल ग्रोथ ट्राजेक्टरी पकड़ा पड़ो साइमल्टेनियसली सोशल जस्टिस को एनश्योर करा पड़े थ्रू रिड्यूसिंग द रीजनल सोशल एंड जेंडर डिस्पैरिटीज टू प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो कटअफ एरिया रोचे मालकानगिरी कोरापुट जो कटअफ एरिया रोचे जोड़ी मेन लैंड रु आउ डिफरेंट लैंड किसी वाटर फाटर रोचे किसी आइदर फिजिकल इनएक्सेसिबिलिटी किंबा हाई राइज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिटीज प्रॉब्लम रोचे यही सब एरिया रे आमे ताको बेटर गवर्नेंस सोशल जस्टिस देवा दरकार से मो स्वाभिमान स्कीम्स से रन करुचे सो ये सब जिन आम देखले ओडिशा स्टेट ऑफ ओडिशा इकोनॉमिक स्टेटस so in a nutshell I am repeating all these things जोटा जोटा आम ऑलरेडी डिस्कशंस कले सो सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी जमती कहली प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस सो बेसिक फीचर्स ऑफ द ओडिशा इकोनॉमी आम बेसिक फीचर्स देखा जमती कि लो कैपिटा इनकम रोची ओवर पॉपुलेशन रोची एग्रीकल्चर पर बेसी लोक डोमिनेंस करुँच राइट अनएम्प्लॉयमेंट हाई रोची राइट अनयूटिलाइज रिसोर्सेस रोची कैपिटल डेफिशिएंसी रोची वीक इंफ्रास्ट्रक्चर रोची रीजनल डिस्पैरिटी रोची इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज रोची नेचुरल कैलामिटीज डिजास्टर्स आम उपर बेसी रोची राइट करप्शन स्कैम्स रोची पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रोची बेले बेले इनइक्वालिटी रोची इन्फ्लेशन रोची पॉवर्टी रोची ये सब प्रॉब्लम सब आमर ओडिशार बेसिक फीचर्स ऑफ द ओडिशा इकोनॉमी कौन सब अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस वी हैव डिस्कस्ड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर देला 21% आपंकर इंडस्ट्री देला 36% और सर्विस सेक्टर दे 42% देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन वेरियस सेक्टर्स देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इम्पैक्ट ऑफ द कोविड एंड द रिमेडियल मेजर्स दैट वी टुक इन द पास्ट एंड व्हाट लेसन्स वी हैव लर्नड ये सब जिनस आम एंड द वे फॉरवर्ड द व्हाट मे बी द कहि भी होबनी फ्यूचर में कोविड नुआ स्ट्रेन आमको आसी जाई पारे और से आम पास्ट आम जो लेसन्स जाने से लेसन्स को आम कहीं भूलवा नहीं आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करवा राइट सो इन बिटवीन द लाइफ्स एंड द लाइवलीहुड्स वी हैव टू प्रायोरिटाइज द लाइफ सो इन दिस स्लाइड आई एम कंक्लूडिंग माय टॉपिक if you have any doubts then please you can give your doubt or put your doubt in my comment box so that I can clarify in that same page. If you have truly enjoyed this video, then please press the subscribe button, press the bell icon, because when I am going to post a new video like this, then you may get an early notifications. So until the next time, stay safe, stay indoor. God bless. Thank you. Understood. 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 Understood.